Welcome to Teaching Era. Welcome to Teaching Era. Today we will learn what is if-else conditional statement. Okay. So firstly, the syntax of if-else statement, if statement, this syntax. We pass the conditional statement here and then our code inside here. So firstly, we write var a is equal to 10 and we check if a is equal to 10, so print console.log, no, here yes, console.log, yes, a is equal to and plus then value of a. Okay, this print 10, this, okay, check, refresh, yes, a is equal to 10, but if you write the value of a is 9, what happened? So check, nothing is console. It's mean if this statement is false inside this curly bracket, not runs. Okay, अगर ये इस स्टेटमेंट को फॉल्स हो जाती है ये, तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके कोड्स लिखे हुए हैं वो रन नहीं होंगे. सो व्हाट इज एल्स? अगर इफ की स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होती है तो एल्स की स्टेटमेंट करेक्ट, आप एल्स की स्टेटमेंट रन कर दो. एल्स में कोई भी हम कंडीशन नहीं देते हैं, बल्कि अगर हमारी सारी कंडीशन हम चेक करते जाते हैं कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, अगर इसमें से कोई भी ट्रू ना हो तो फिर हम एक कंडीशन को जो है वो रन करवा देते हैं जो हमारी एल्स की कंडीशन होती है. तो हम यहाँ पर रन करवा देते हैं a इज console.log, a इज नॉट इक्वल टू 10. अगर यहाँ पर जो है ये a 10 है तो ये रन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये रन हो जाएगा. चेक करते हैं हम, a इज नॉट इक्वल टू 10. अच्छा, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 10 कर देंगे तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी. तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में और भी देखेंगे डीपली कि इफ एल्स बेसिकली होता क्या है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट का ये, और फॉर लूप्स. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे फॉर लूप्स पढ़ेंगे और वाइल लूप्स पढ़ेंगे, स्विच की केसेस पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस कोर्स में हम पढ़ते जाएंगे. सो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.